Nitya-dhama is called Ananda-dhama. There he does Anandotsav. Everything has opposite, but Anand, the word, doesn't have any opposite to it. We add prefix to it and make it opposite. Nirananda. Nirananda. Opposite of Anand, which people say is Nirasanda, but the Nir is prefix, not the opposite. Opposite should be totally different from the word. And the word which does not have any opposite, we put prefix to it, like what is the opposite of sukh, happiness, is dukh, which is sadness. We say sadness and happiness. The opposite of day is night. Ratri. Adin. Adin. And if you would prefix to the word day, which is din, is adin. There should be totally opposite, like day and night. Night is a different word and day is a different word. Day and night are two different words. Like if it's woman, then it's men. But the word Ananda, there is no opposite to the word Ananda. We do it Nirananda. We add prefix to it. So Chidanandamay-dham. Chid Anandamay-dham. There is no sadness in that world, only Ananda, means happiness only, where Bhagavan, Ananda-mayi-purusha, he does lila. That dham is very beautiful. Bhakti Vinod Thakur and Jayavtaram Grantha, that that all the living entities living in Golok Dham, they even don't know that there exists a Mike Dham. Jad Jagat is called Mike Dham. They even do not know that people are suffering in the Mike Jagat they are because they are so indulged in seva.
There is no time to think about this Jada Jagat, Mike Jagat. We have a lot of time, so we talk a lot. Those who do Harinam and Harikatha, they they do not know what is the day today. Those who are so indulged in Harinam and Harikatha, even I also don't know what is today, what is the day. Those who go to office, they have to see the calendar. We don't know what is the day today because we people know because we have to go to school, send children to school, we have to go to office, so we have to see the calendar. But those who are indulged in Harinam and Harikatha, they don't know what is the day today. Our work is to come to Mangalarti, wake up at 3 and do Harinam and Harikatha. We don't have anything. Sadhu, what is the work of Sadhu? Is it true or not? Today, Sunday or Monday, we do not know. We just have to ask when is Ekadashi. But if we'll not remember Ekadashi, then we will be like Gaurkishore Das Babaji Maharaj. That when was Ekadashi, he did not do Ekadashi, but when there was no Ekadashi, then he did Ekadashi. When there is Ekadashi, he is taking prasad, but when there is no Ekadashi, he is not taking prasad. He is saying that today is Ekadashi. This is Bhav. People who are indulged in Bhagavad Chintan, they don't have any tension about this Jada Jagat, materialistic world. We do not do bhajan, that's why we are indulged in criticizing, talking, gossiping. But one who is doing bhajan, he doesn't have any tension. Bhaktivinoda Thakur is singing this kirtan, Atma-nivedana. He is explaining in this bhajan. When Jeev, when he does
is Atma-nivedana, surrender. तो उसी प्रकार चित जगत में In कृष्ण Chit शरीर Jagat, the है, jeeves, भगवत सेवा में डूबे रहते हैं। they are so indulged in Bhagavad Seva. उनके लिए पता भी नहीं कि माइंड मन से कोई धाम है। They even don't know that there यहाँ पर even भी exists a material world, Mike Jagat, है, and there इस people जगत में live. कोई दुखी है न And सुखी है अब in this world, are people happy है, or अब कोई दुखी नहीं है कोई सुखी नहीं है, in क्यों? this world there is no आत्माभिमान कर person रहे who हैं, is मैं happy or दुखी हूँ sad और मैं because we are doing abhiman. We have देखो ego that we are sad or है, we are happy. ये दुख सुख किसको अनुभव हो रहा है? Who feels sadness or happiness? It is the स्थूल शरीर man, the और mind, sthul सूक्ष्म sharir शरीर and के sukshma द्वारा sharir. हम sharir. दुख और सुख अभिमान कर रहे हैं और कुछ We नहीं are feeling happiness and sadness just है, because of sukshma हैं? and sthul हम sharir. स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अभिमान करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं या सुखी हैं। आत्मा में कोई दुख नहीं है सुख नहीं है, In Atma there is no happiness or sadness. है? आत्मा जो तत्व है, आत्मा क्या है? What is Atma? चिन्मय Soul. स्वरूप। It is a chinmay of आत्मा में thing. कोई दुख और सुख अनुभव नहीं होता है। There is no happiness or sadness feeling to Atma. ठंडी किसको लगता है? बोला जाता है Who साफ है। feels coldness? It ठंडी is the body, not the है, mind or the Atma. दुख किसको लगता है? मन। मन में दुख Sadness, लगता है। हाँ, शरीर ठीक है, मन ठीक नहीं है। sadness, we feel मन sadness ठीक because है, of our शरीर mind. ठीक नहीं We say that our body is fine, but our है। mind is not चाहे fine. सुख दुख की अनुभूति जो है, Sadness and happiness, the ये feeling, स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर में it होती is है। only because of Sthul आत्मा and चिन्मय वस्तु है। Sukshma Sharir. क्यों? Atma is आत्मा Chinmaya, भगवान की अंश है। transcendental, क्या आत्मा because भगवान की अंश it is a part. Atma is a है? part of it. ये बात ऐसी नहीं Is it true or not? है, गहरी में प्रवेश कीजिए। आत्मा के Enter ज्ञान में into वायु का Gyan. स्पर्श होता है। Only the आत्मा के air शरीर can touch, जब से विरक्त हो, है? not even the air. है? Fire आग can से touch जला नहीं सकता Atma. है। No one can इस touch जगत की Atma, अनुभूति में नजर से गुजर के which बाद does not have, मतलब which does not take birth, or और he, यदि or कुछ the Atma शब्दों even में does not मानेंगे die. अन्नमाने शरीर है। आत्मा इस शरीर में विराजमान है, Atma इसलिए is हम सुख दुख present को in our अनुभव करते body. That's why we are feeling happiness and sadness. हैं। आत्मा शरीर से निकले If निश्चय के Atma कारण comes out of the body, then the वस्तु body किसी stays को क्या there. लगता है? ठंडी लगते हैं, गर्म लगते हैं, Then that person है? doesn't feel any feeling of, तो शरीर से he बाहर does निकल not जाता feel any happiness or sadness है। when the Atma comes out of the body. तो आइए पढ़ता हूँ। इसमें ये तत्व इसलिए कहा गया चित्त जगत This में tattva is जितने भी said because जीवात्मा in हैं, Chit Jagat, उनके कोई all the स्थूल living शरीर नहीं और entities, उनके they कोई do not have any sthul and सूक्ष्म शरीर sukshma चित्त शरीर body. में विराजमान है। They are present in Chit चित्त body शरीर व सच्चिद शरीर or in Atma Sharir. They are present. है। Chit Sharir or अब Atma इसलिए वो Sharir. They are लोग present. उस जगत की सेवा में इतने रह गए They हैं, are so much indulged in कि seva in पुरानी that को world, इधर द्वारका मथुरा be कहीं भी it जाओ, any dham, ये Ayodhya, सब कुछ Vaikunt, ठीक ही है, anywhere. But that लेकिन भगवत chief, सेवा में he is so indulged in the seva. वो आत्म वो जीवात्मा की जैसे आंख है, कान है, नाक सब कुछ है, They लेकिन वो सब have सब eyes, क्या है? ears, nose, सब everything, but प्राकृतिक चिन्मय से
but everything is transcendental there in that world. It will look like stool sharir, stool body, but it is not. When you will go, you will see. हैरान हो जाओगे You will be very हैं? shocked. जैसे आपके जैसे आंख है नाक है कान है Like you have your हैं? ears, nose, इंद्रिय आदि everything. जो होती है उनके भी उसी प्रकार Even they also have इंद्रिय it. आदि हैं? हाँ? जिसे गोलोक वृंदावन धाम है Like in वहाँ Golok पर स्त्रियां Vrindavan रहती Dham, हैं there are हैं? women, male, मतलब सेवा female, को भी शरीर मान कर but हैं? everything भगवत is सेवा में according आत्म to निवेदन the में ऐसे बंधन नहीं होता seva. भगवत सेवा के अनुकूल शरीर अनुभव कराता है Bhagavad Seva, ये दूसरे के शरीर की everything सेवा is करना according to Bhagavad Seva. है क्योंकि इसमें प्रतिकूल नहीं जाता Nothing is opposite, everything is in favor, है nothing in against of समझ it. में आ रही है ना Are क्या you है understanding or ये not क्या what you have understand? What is है Pratikul? भगवान के प्रतिकूल It is शरीर लेकर opposite. के सेवा नहीं कर सकते Pratikul is opposite, against it. हैं अच्छा Nothing भगवत is सेवा है कि against नहीं in that world. हैं आगे There is सेवा है lion in that दूसरे world. हैं जब किंचित There is प्रतीतम scorpion also. प्रतीतम दृष्टे समग्र तक सर्वात्मन कुलदेव ज्ञान परम शास्त्र युवसुद्ध विष्णु ज्ञान के ब्रह्मांड की सुप्रीम मध्यम प्रवाह मैं जो शेर आदि जो है Mm, है there is lion वो क्या and करता है everything. But कृष्ण इस लीला की अनुकूल में सेवा करते हैं they are in favor of Krishna Lila. They are यहाँ not पर जो शेर है against. शेर क्या But करता in है this world, the भगवान के lion, लिए लड़ाई नहीं है he is शेर dangerous to the people in this world. Lion, they eat आखिर the cheese. थोड़ा समझ लो They can kill है and they can eat. इस जगत में वो जो बिच्छू जो है बिच्छू क्या करता है उसका भाई है गांस देते हैं अभी टूट जाएगा तुम्हारा टूट जाएगा Scorpion लेकिन can उस जगत में bite बिच्छू you होता है बिच्छू नहीं खाएगा in this world. But in that world, scorpion is there. But he will not bite in that world because everything is in favor of Krishna Lila. शेर Nothing है मारना against पड़ते हैं Krishna. है Lion there roars, विशेष करके श्रीमती राधिका जब especially Srimati Radhika परिशास्त्र when करती है परिशास्त्र अपने प्राणनाथ के साथ मिलने के लिए जब जाती है Srimati Radhika और उस is समय going to meet her beloved. लोग आती है At तब that तक time there is जैसे night, समुद्र आपको देखा रेस में है there are rays of उस moon. समय ये सब दिखाते हैं And that time all और this शेर lila is बाहर shown. आती है The lion at that time is तब वो roaring. डर जाती है And Srimati Radhika gets अब scared. वो शेर क्या है कैसा That lion is who? Who is that lion? भाई उस जगत में बुरे बुरी में कोई सेवा नहीं करती In सब that world, उनके कहते no हैं one कृष्ण is अनुकूल against. अनुकूल Every, सेवा everything is in favor of Krishna है Lila. Anukul तो Parivesh. जितने ये सब जो बोल रहे हैं वो सब स्वयं जोगमाया ही है जो Whatever है is seen विलास there, की साथ Yogamaya is supporting the Leela है there. समझ में ये कोई कोई शेर जो है बिच्छू आदि जो है Scorpion lion there. ये सब स्वयं जोगमाया ही Yogamaya कृष्ण सेवा के for Krishna लिए ये सब Seva. है She is making ये circumstances like that. केवल विवरण देती This is explained. है चाहे बुरी बुरी में कौन सेवा करे बिल्कुल Who will serve जैसे स्वयं against? जोगमाया क्या करती है So, Yogamaya हैं हैं स्वयं जोगमाया विलास का पालन करने के लिए विलास आसन करने की बनाने की कृष्ण का for आसन tasting and relishing तो
the happiness and everything. Yogamaya herself becomes and or makes circumstances like that which is in favor, support of Krishna Lila. Nothing is against in that world. Who will become snake there? And Purnima Ratri में Srimati Radhika On Purnima night, Srimati Odisha में Radhika, Odisha पहुंची and प्राणनाथ गोविंद के साथ मिलने के लिए क्या when she is going to meet his beloved Krishna, मधुर मधुर विश्राम मधुर भाषिताय श्रीमती राधिका Srimati Radhika, मधुमास में बसंत काल एक in मास की कैरेक्टर मधुमास काल Basantakal, वैसा चैत और वैसाख ये दोनों मास की कैरेक्टर मधुमास काल it is called Madhumas. है Spring season. वैसाख चैत और वैसाख दोनों महीने की कैरेक्टर मधुमास काल Spring. दूसरी कैरेक्टर Spring season. स्प्रिंग सीजन बसंत काल Basantakal, spring season. There is not so hot, not so cold. निसायाम ज्योतिर्विभासिताय मधुमास That is called Madhumas. है Spring season मधु is called Madhumas. और मधुमास मधु मधुर है Two, Vai- ज्योतिर्विभासिताय two विशाल Vaishak and one Chet is there. है चंद्रमा के किरणों के द्वारा है चंद्रमा Rays के of moon. किरणों के द्वारा है उज्जवल जिल 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 करता Everything is मध्यरात्रि so में glittery. है विशाल It's होती है midnight. मध्यरात्रि है कोई When there are दिखाई rays नहीं of moon in the midnight, है and everything is so glittery और and स्वयं everything. राधा जी कहते हैं And Srimati कि कोई Radhika, विशेष सखी है there कमर is पर one, हाथ रख करके and चलती है she's she has put one hand of और her लोगों से on भी her कहते one कहते sakhi, कि and she is मधुमासी going, कैसे तप्त कांचन गौरांगी and she's कहते हैं Taptakanchan Gaurangi, यानी like melted gold, कितनी सुंदर स्वरूप है so है beautiful form. रात्रि में चले जैसे लगेगा जैसे सोने की पुतली मानो When she is moving, it looks like a है gold यदि puppet राधा is जी रात्रि going. काल में कभी भी कहीं जाओ When कोई Srimati सैर Radhika, सजाएगा कोई सारा सुंदर स्त्री के when Srimati Radhika moves in the midnight, तो कैसे लगेगा not puppet, sorry, it's doll. When Srimati Radhika is moving in the midnight, she और looks like a ऐसे ही beautiful gold doll, छटाई हुई and the है effulgence of body and the effulgence of her body चारों दिशा को illuminates all the संपूर्ण four directions. उजाला कर देती है ऐसे वर्णन है This is explained. है राधा जी रात्रि काल में जब Srimati विशाल Radhika, रथ में when she's चले जाते going हैं to तो meet her आंखों की beloved, कांति जो her effulgence सारी दिशा को illuminates all the उजाला कर देती directions. है और यहाँ पर ऐसे जैसे सभी को आत्मा में पड़ जाएगी यहाँ Everywhere पर eyes फिर will प्रकाश go कुछ where उजाला जैसे करके where there is brightness, everyone eyes will go there. आप है सबकी नजर पड़ जाएगी Everyone eyes साथी will क्या go करती there. है स्त्री क्या करती So है what the Sakhi देखो does, तो बुझा राधे की आंखों में क्या लगाती है फोटो लगाती है so what Sakhi does to hide her, they हैं? put camphor on her फिर body वो effulgence जो है so that the effulgence which is there, राधे Srimati पद्माकर Radhika's के माध्यम effulgence, से देखा जाती है so that the effulgence get hided by the camphor. वस्त्र तो पहनी हुई है She वस्त्राभूष is पहनी हुई है dressed up, इसमें but उजाला जो है there वो is मानो so much अपनी effulgence, so सौहार्द much और भी brightness ये सौंदर्य माधुर्य को प्रकाश करती that Madhurya is है being shown even though इसी she से is सखी क्या wearing किया her clothes. है उसके So ऊपर what does Sakhi does? पोती She लगाई puts camphor on her body to तो hide the इससे effulgence, to hide the है effulgence. और तीन दो कारण से लगाई They put camphor
because of two reasons. योगामय में First, आता है कि शरीर उत्तप्त हो जाए, because विद्युत होता है, because of separation of Krishna, है। her body is so heated up. और दूसरी इसमें क्या So करते हैं, to राधा जी अमृत कांति उसका जल calm को down the heat, they भावना put में camphor. वो And तेल उसमें second गले में पड़े, is that people do not see. Her effulgence doesn't illuminates the जैसे जैसे राधा directions, जी के and ऊपर people do आएगी, not see her. So तो दक्षिणा में her जाएगी, sakhis put camphor on her body. तो उस समय क्या कपड़ा पहनेगा, काला सफेद कपड़ा हाँ पहनेगा, पूर्णिमा में है। सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, on Purnima और she हमेशा wears white. श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और इस In समय midnight राधे जी नील अवस्था she is wearing dark colors, dark blue, Neel was sun, but in daylight, in bright, she wears white. जैसे कि वर्णन किया गया, इस सब में वर्णन है। तो मैं इसलिए कहा है मधु मधुर विषय मधुर विकास नारायण, इतनी सुंदर मधुमास, So beautiful spring season, Madhumas, कितना मस्त अवस्था, और राधा जी कैसे चल रही है, and how she is ये moving. दूसरी सखी के जो है She is keeping one hand on the shoulder of धीरे धीरे one Sakhi, and very slowly and slowly she is walking. इसे हम लोग वर्णन कर रहे हैं। गायत्री महामंत्र में हरिलयते नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजनिभ मृदुमारुतचलितम हरिलयते नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजनिभ मृदुमारुतचलितम। कितनी सुंदर बनी रामानंद राय Ramananda Rai is explaining सुंदर how beautiful वर्णन किया, he is explaining. सुंदर कलयुगी में सबसे मैं इसलिए कहा था, तो फिर आगे जो राधे जब चलने लगी When महाराज Srimati Radhika is अपराध moving बन गए, in midnight और कहीं की जीवन जन्म बदल गई, कहीं in की जीवन Braja, बदल गई, there are very आकार um, की बदल a lot of forests are there, गई, तो तब क्या करें, and it's शेर dark. So, हुंकार करें, and at that time the lion roars. शेर हुंकार करें, शेर के हुंकार सुन के राजा जी डर As जाते soon हैं। as उन लोगों का एक Srimati तरह Radhika listens मनुष्य the मात्र roaring voice of lion, she gets scared. जब शेर जब हुंकार Loko करे, Leela. राजा जी डर जाते हैं, Srimati Radhika gets scared. तब एक मार्ग से छोड़ के दूसरी मार्ग में चलती है। Then she leaves that path and starts to move on the other path. तो ये इसका क्या बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, कि राजा जी कैसे That अपने how प्राणनाथ Srimati प्रभु जी के Radhika साथ मिलने की तैयारी है। she is going to meet her और beloved इसलिए ये Krishna, सब दिखाई पड़ता है, Pranakanta. उस जगत में से In that world है, there इस is जगत में lion, कुछ भी आप देख रहे हैं, but उस जगत में सब कुछ है, क्योंकि सभी whatever you are seeing in this world वैष्णव सेवा की is also there in that प्रतिकूल नहीं है। world, but everything is in लेकिन favor, but जब जिसने nothing is सेवा मुक्ति against प्रबंधम Krishna वो Leela. सचे समस्त सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम सर्व आनंदमय नित्य प्रिय अत्यंत सत्प्रिय है गुरु Everyone is भगवान को मुकुंद Priya द्वैतम means beloved of Krishna, लीलानुकूल और सत्य कृष्ण लीला के and अनुकूल everything is विपरीत चले जाते हैं। in favor, nothing is इसलिए मैं against, कहा not ये pratikul, जिस it's जगत में anukul. तो वैकुंठ लोग जिस जगह में बैठे हुए हैं, मथुरा में हो, And वृंदावन be में, it वृंदावन में, Vaikunt, Ayodhya, उस Golok, जगत के Dham, जितने भी प्राणी समुदाय हैं, all the living entities there, सब कृष्ण लीला के क्या अनुकूल, everyone is in favor
of Krishna Lila. No one is against लीला संपादन करने के लिए, लीला का आस्वादन करना to के लिए, complete the Leela, for relishing the Leela. इसलिए Everything is प्रभु in कृष्ण favor. In this world, है we can महाभारत see में क्या against. बोलते हैं, संसार में केंद्र किसको बोलते हैं? He is dangerous in हैं? this world. नरभक्षी है, नरभक्षी पक्षी ही है, नरभक्षी है, शेर है, इसमें क्या उदाहरण है, वृंदावन है, यहाँ पर कुछ इंदौर से है शेर, नदी पार कर पा रहे हैं, In Bengal, the lion comes from the forest. It is very difficult to catch कितने लोग him, उसको मारते हैं, and he kills many people. और शेर जो होते हैं बाघ है, तो ऐसे छुप कर निकल जाते हैं, बिल्कुल बिल्ली के मारते हैं, And the lion hides like a cat. You will even not know अचानक that he is आकर standing, आकर and suddenly he comes बहुत and ताकत है, kills the person. इसके पैर He में is very और healthy उसके गर्दन में इतनी ताकत है, in his neck है, and in his leg. He has a lot of power बिल्ली there. Even and even also he can kill a elephant. बहुत शक्तिशाली, He is very powerful. देखने में तो ऐसे बहुत शक्तिशाली He may look like normal, but he is very powerful and dangerous. नरभक्षी, Narabhakshi. लेकिन उस जगत में जो शेर है, But वो भी है, even but in that world everything is there. बिल्कुल Lion is also उस there, जगत में everything is there. सभी चीज है, But nothing is against the लेकिन Leela, लीला संपादन Krishna करने के लिए Leela. शेर क्यों नहीं है, If lion will not be there in that वो world, लीला के लिए, how will the शेर Leela take लीला place? करने के लिए For है, completing the लीला Leela, लगाए हुए जंगल relishing the Leela, है, मानो कि even हम Srimati Radhika gets रात्रि scared को अपने किसी as soon प्यारे as से she प्यारी के listens the साथ में roaring मिलन के sound लिए of क्या किसी जगह lion. एक अथवा दो सखियां जाती हैं, Only there are maximum to maximum one or two sakhis और उसके with लिए वहां Srimati जाती हैं, Radhika when he is going to meet अपने his साथी beloved प्राणकांत की Sri है, Pranakanta Krishna, चिंतन करने के लिए, and she is उस समय शेर निकाल करके है, thinking वो about लगाती है his Pranakanta, और वो जाते चुपके चुपके दूसरी रास्ते में चले and he जाते leaves. हैं, इसलिए Then she leaves that path when she hears जो भी करने the लगता है उसको भी the ये सब sound of, सखियां तेरी हुई और and these flowers are also there in that world. So beautiful fragrance smell. हैं, उस जगत में जितने भी जीवात्मा है, All वो the इसी living लीला को entities समझते हैं, in उन सभी the का in that world who are residing there, है, they देखने में जैसे स्थूल they have लेकिन सब transcendental body. चिन्मय शरीर है, They it looks like that they have sukshma shari, but everything is ऐसे transcendental. जीवात्मा को जानते हैं कृष्ण, The living entities residing there in that world, कृष्ण सेवा में इतने डूबे रहते they हैं, are so much है, indulged in Krishna seva भगवत सेवा में इतने डूबे रहते हैं, ये माइक जगत नाम से कोई एक वस्तु है that they और even इसमें don't कोई know एक that चीज है, there even exists. ये There नहीं is a जानते, name called Mike Jagat. This materialistic world, they even don't know. इतना डूबे रहते हैं, इसी सेवा में भगवत सेवा में They are आप indulged यहाँ in बैठे Bhagavad हैं, Seva. You are sitting आप here, 10 बार घड़ी देखते हैं, कितना you प्रताप है, watch 10 times over है, clock because you ट्रेन have to पकड़ना go है, बस पकड़नी है, फ्लाइट to पकड़ना work. You है, have to go to साथ में office. बैठे रहे, And if you sit in है, Harikatha, then बैठे कुछ नहीं, you cannot go to office then. प्रधान जी बोलते हैं अंदर, If you're so much indulged in Harikatha, the flight is gone. उसके बाद घड़ी देखना पड़ता है, So every time you have to watch क्योंकि उस जगत the में clock. चिदानंद धाम But that is Chidanandamay-dham, transcendental world. तथापि योग में दिन और रात्रि बिताई, ये तो कल लीला में
Ashtakalin Lila, Yogamaya shows day and light. Ashtakalini, Rati or day. Eh, divided into It is divided in day Nishanta and Lila, night. Nishanta Aparahan Lila, Lila, Pratakalin Lila, Aparahan Lila, then Aprahan Lila, Madhyana Lila, Aparahan Lila, Madhyana Lila, Aprana Lila, Sayana Lila, Pratyuta Lila. Sayakal Lila. This is divided into Ashtakalini. These all Leelas are shown This is the way. eternal, Nitya-dhama, eternal. Atma-nivedana, Atma-nivedana. Jai Sati, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukuttam, Jai Gopinam. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukuttam, Jai Gopinam. Oh, Krishna, Jai Radhe Rani Ki, Nanda Seva Vrindavan Rani Ki. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukuttam, Jai Gopinam. Oh, Radhe, Radhe, Radhe Shyam, Radhe, Radhe Shyam, Shyam, Radhe, Radhe, Radhe Shyam, Radhe, Radhe Shyam, Shyam, Radhe Shyam, Sundar, Jai Gopi. Radhe Shyam, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukuttam, Jai Gopi. Oh, Krishna, Jai Radhe Rani Ki, Nanda Seva Vrindavan Rani Ki, Sita Seva Nitya-dhama, Nitya-dhama Madhura, Madhuri Sore, Madhurani Ki, Swami Jio Jio Pyar Swami Loha, Swami Samani Madhurani. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukuttam, Jai Gopinam. Swami so mero pyar, Swami mero bhakti, Swami samani, आठों जाम ये प्रार्थना प्रार्थना रात्रि हो गए दिन हो गए There is day and दिन night. डिवाइड करके दिन हो गए It is divided in day and night. रात में चार और दिन में In night there are four and in day there are four. अष्टकाल लीला करते हैं दिन Ashtakalini रात Leela होता is being shown. है वहीं पर शुक्र भी है There is वहाँ sun, पर चंद्रमा भी है even moon also. शुद्ध उदय अस्त है Sunset and sunrise are there तो in ये that कैसे world. तो शास्त्र में कहा है हम भाव People will ask how. है So it is written in वो Shastra. जगह कैसे जिधर से भगवान के अंग कांति के द्वार है ये साधन है भगवत दर्शन के लिए कुछ जगह है उसके दर्शन करने के लिए से भगवान के है जैसे भगवान रामचंद्र रामलीला में Like क्या है Ramchandra in भगवान Treta रामचंद्र Yuga, जब दत्तारण्य में प्रवेश करने लगे वो समय के ऋषि लोग हजारों साल तक है तपस्या कर रहे गोपाल मंत्रा में जप कर रहे मैं तो की स्थिति तब तो हो चुका है शरीर स्वरूप बुद्धि हो चुका the है Jivas केवल भगवत have दर्शन के लिए Swarup Uplabdhi, but still तो they ऐसे want लोगों के दर्शन darshan. देने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र ये So बड़े जंगल में to give darshan और to those रामचंद्र bhakts भगवान को कोशिश also, कर वास्तव में ऐसे भक्तों की दर्शन देने के to लिए give कृष्ण ने darshan कृष्ण ने कहा to because of the eagerness of the bhakta, the even Ramchandra also went to jungle forest. He accepted this only to give darshan to the bhakts who were so eager देखो देखो to meet him. रामचंद्र ने ऐसे कर कारण ही है
He only accepted he accepted the 14 years of exile. He only accepted just because such saints were doing so much tapasya, hard austerities, just to have darshan of Ramchandra. So he went to jungle to give darshan to them. Ramchandra went to the ashrams of the saints to give darshan in Dandakaranya. 1,000 years. And they were doing Gopal mantra. They have Swarupa Plabdhi and they are so eager to have Bhagavad, like even Shabri also, to give darshan to her. Ramchandra came. So give darshan to such bhakta. Bhagwan comes to this world. To give ananda to bhakta. I do a lot of lilas, manifest those lilas which are taken place in that transcendental world. Same Leela is going in transcendental world also and here also, like Mahaprabhu in Swetadeep Dham or Navadeep Dham and in Golok Vrindavan Dham. All the gopis, all they are manifesting in this Navadeep Dham, Shwetadeep Dham. Same Swarup Damodar Lalita Sakhi in Braj, Lalita Sakhi. And in Mahaprabhu's Dham, it's Swarup Damodar, came in the form of Swarup Damodar. Two Leelas are going besides, and the Swarup is also being shown in both the Leelas. Mahaprabhu, when he took sannyas and he's going, Ha Krishna, when he's crying and moving, and that time Acharya are explaining that one Sakhi is saying to another Sakhi in Golok Vrindavanda that in Golok one Sakhi is pointing out to another Sakhi that see how my Prantikant is doing Leela in this Navadeep Dham. See, today our Pranakant, our Pranakanta Krishna has taken sannyas. Our Pranakanta Govinda is Sri Lampat. How will he take sannyas? I cannot believe that. It's so, it's beautifully explained. In Nitya Golok Vrindavan Dham and Sweta Dham. See how, watch how Pranakanta Govinda has taken sannyas and he's crying. Sakhi, another is Sakhi saying, oh, it's Chal Kapat. I cannot believe it cannot happen. She says that see the Arun Vasan means Arun clothes, Arun like clothes. So another Sakhi says, no, it's all fake. When we start to when we cried and when we were in separation, our clothes they got all wet, and that the same cloth now he is taking and wearing. They do not believe actually. See, same Leela is going in Shwetadeep Dham and same Leela is also going in Golok Dham. Two Leelas are moving side by side. One is Milan and another is Sambhogmai and Vipralambamai.
Gaur Lila Gaur Lila or Krishna. and Krishna Gaur Lila. Lila Krishna Lila की कोई विरोध ना हो, कोई It एक ही साथ Gaur चलते हैं, Lila nourishes the एक Krishna साथ Lila. बहुत सारे वर्णन हैं, जिसे कहते हैं अनंत जाति का आनंद, इस करके आनंदम, जिनके आदि श्लोक है, लास्ट श्लोक है, समझ वर्णन करते हैं, You have to listen Hari Katha. और मेरे भक्तों से आनंद है, कि भक्त का आनंद होने की नहीं होती, एक गौर लीला और एक कृष्ण लीला, एक मिलन लीला और एक From this, the Jeev gets Anand. Two Leelas are going Gaur Leela and Krishna Leela. Sambhogmayi Leela and Vipulamba Leela. In Vaikunt, these Leela are not there in Vaikunt. Parakshita Bhav Leelas are not there in Vaikunt. The word Adi, they explain there it's not in Golok in Golok Vrindavan. No, it's not like that. Vrindavan is the supreme topmost in Shastra. There is one Vaikunt and another is Mahavaikunt. And above that is Golok Vrindavan. It's the deep thought. But people say that where, when the word Vaikuntha comes, so the Leela is also not there in Vrindavan Dham. But it's not like that. In Vrindavan Dham it is there, and in Vaikuntha it's not there. The transcendental world, Prakrit Leela is there. When the word Vaikuntha Adi is used, one is Vaikuntha and another is Mahavaikuntha. And when there are many Vaikunt, that becomes Mahavaikunt. Bhakti Vinod Thakur has given. एक वैकुंठ धाम होता है और एक महावैकुंठ होता है, उस महावैकुंठ धाम में योग आ जाता है, You have to read Chaitharam, written by Bhakti. और उसके ऊपर जो है गोलोक, और गोलोक के ऊपर धाम कहा जाता है, Above Mahavaikuntha's Golok, वृंदावन की चारों तरफ एक परी कहा जाता है, जैसे कहा जाता है boundary of Golok is Mahav. Golok is the boundary, and then above Gokul is Vrindavan. गोलोक में गोकुल इस तरह, In Gokul, it's कुछ Vrindavan. वहां से विचार करते हैं Gokul is the boundary of Vrindavan, and Vrindavan is above Gokul, and below Gokul is Mahavaikuntha. जैसे कमल का सक्रिय हो जाए, और उसके It's ऊपर जो like है वो lotus. गोलोक में गढ़ीला है, उसमें जहां पर वो क्या रहते हैं, पॉलन मिलता है, Pollen. थोड़ा थोड़ा जो पीले पौधे होते हैं, जहां से जो है वो ये निकलता है, मधुरा की रस निकालते हैं, इससे धुआं जहां पर प्रवेश कर जाता है, उन्हीं के स्थान जो है वृंदावन। Vrindavan is where there is pollen in the lotus.
and there Krishna with his your associates does the lila. हैं? कोई कोई धाम की लीला भी करेगा, हैं? इस सबसे बड़ी एक जो वृंदावन था, वृंदावन की महिमा की किसने बताई, हैं? अब हमने वृंदावन में दो प्रकार के, एक पंचदशी वृंदावन होता है और एक प्रेम वृंदावन होता है। क्या बोला? एक पंचदशी वृंदावन, There are two types of Vrindavan. हैं? मेरे को आती नहीं बता, मेरे को आता और एक होता है बृहद, ये राधा कुंड से लेकर के, हैं? क्या है दूसरा वृंदावन वृंदावन? बृहद वृंदावन और एक पंचकोसी वृंदावन और एक बृहद वृंदावन. There is Panchakosi Vrindavan and Brihad Vrindavan. It's two types of Vrindavan. और ये वृंदावन में और फिर एक शब्द कहा जाता है, ये अंतर्गृह परिक्रमा और ये बहिर्गृह परिक्रमा। क्या बोलते Antagriha Parikrama. हैं? An- तो 84 कोस की परिक्रमा जो होती the 84 kilometers Parikrama, if you see in map, है, और एक अंतकोश परिक्रमा, there is one Antakos Parikrama and there is Bahya Kos Parikrama. ऊपर से परिक्रमा Like many people do Parikrama from above. कंटिन्यू पैदल 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 पूरा है, कानून को लेकर चल, जो नाचनी नाचे मंदिर है, एक पुराना गाँव का पुराना है, बोले कहाँ Gurudev said once, when we do Parikrama, we do Antagriha Parikrama. We do Antargriha Parikrama. Inside we do Parikrama. And many people do Parikrama from above. Panchakos. Panchakosi Vrindavan and Brihadman. We do Antargriha Parikrama. उसी तरह है वैकुंठ दे, ये आदि से तरीका आदि कहने से When we use the word Adi, Vaikuntha Adi, it goes to till Mahavaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura. It all comes under Mahavaikuntha. वैकुंठ शब्द जो होता है विरोधा गुणा निंदा धर्म की देखी ना उनका सब तरह की Satarajatama is not there above Vaikuntha. नारायण के धाम, मकसद अवतार के धाम, ये सब के धाम, Narayan Dham all comes under Vaikuntha, Mahavaikuntha, like Narsingh Dev Avatar, उनकी धाम, बढ़ादेवी, Baradev. उनकी धाम में भगवान के जितने अवतार, All the avatars of Bhagwan has one dham, and every dham comes under Vaikuntha. There is one simple thought and there is one deep thought. इसी तरह वैकुंठ आदि की तरह से उत्तरा आदि When we use the word Vaikuntha-adi, it goes till Vaikuntha Dham, not till Maha Vaikuntha. In Chaitanya Charitamrita, to have darshan of these leelas, Bhagwan comes.
Demigods like Brahma, That's why Adi, Brahman Puran is and Tatat, Kasa Tatat, Prasad. And this is the Brahma even they are Brahman also Shastra stand short. Krishna Bhagavan is Sarvaguna Paramatta. Even Brahma got confused that Even Krishna Brahma is a normal boy or he is Mane Bhagwan. Gopasya और सभा में ठीक करिए देखते ही हम भगवान नहीं Brahma, है he took his calves and coward boys, sakhas. मोक्ष से गोपने भक्त तुम्हारे गोपनायक इवे अपन नाम दास सप्रवासन आके श्रृंगार साई प्रेम चतुर्विध भक्त अभाव ऐसे वर्णन किया क्यों स्वयं भगवान ने लीला की दास सप्रवासन अब से श्रृंगार के माध्यम से The Madhurya of Shingaras, एक सत्य एक Sakya फिर and परके Parakya. भगवान Parakya is shown higher than Swakya. आगे जाके सब रस इसी का सिर्फ दीप माधुर्य जितने भी रस माधुर्य की बात हो गए सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है The topmost rasa is Shringar rasa. सबसे रस जो भी आए Shringar rasa is divided into two, Swakya and Parakya. और प्रत्येक रस की सबसे सर्वश्रेष्ठता माधुर्यता And केवल माधुर्य topmostness of वृंदावन Parakya is shown. वृंदावन में And in सबसे Vrindavan, माधुर्य it is shown Parakya Bhav.